बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल। मैं हूँ टीचर आयशा और हम पढ़ेंगे मैथ्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम कर रहे हैं मैथ्स की बुक फॉर 5+ ईयर्स और अभी तक बहुत से इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हमने किए हैं। हमने नंबर्स देखे हैं, 1 मोर 1 लेस, फिर हमने साइंस पढ़े हैं और हमने कंपैरिजन्स भी पढ़े हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अहम हिस्सा है मैथ्स का, जिसको हम करते हैं किसी भी दो नंबर्स को जमा करना, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एडिशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्योंकि डेली लाइफ में भी हम ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जब भी हम जमा करते हैं या ऐड करते हैं, हम उसके लिए एक स्पेसिफिक साइन यूज़ करते हैं जो है प्लस का साइन। दिस इज़ हाउ द प्लस साइन लुक्स लाइक। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल दूंगी कि अगर आपके पास 2 पेंसिल्स हैं और आपके पास 3 पेंसिल्स हैं, हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर ऑल टुगेदर। जी, आपने इन दोनों को ऐड करना है। तो जब भी हम ऐड करेंगे तो हम फिर इनका टोटल निकालेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 पेंसिल्स ऑल टुगेदर। और जब भी हम एडिशन करते हैं तो उसके साथ हम स्पेसिफिक वोकैबुलरी यूज़ करते हैं। हम कहते हैं हाउ मच इन टोटल, हाउ मच ऑल टुगेदर एंड सो ऑन। और जब हम इसी का ऑपोजिट करेंगे, सब्ट्रैक्शन, उसके साथ भी हम कुछ स्पेसिफिक वोकैबुलरी यूज़ करेंगे। अब हम जल्दी से चलते हैं अपनी बुक की तरफ, क्योंकि हमारी बुक पे एडिशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वेज दिखाए गए हैं। एडिशन हम एक से ज़्यादा वेज में कर सकते हैं और उन सब वेज को आज हम सीखेंगे। तो ये है हमारी बुक का पेज। तो ये है हमारे बुक का पेज। इट इज़ सेइंग एडिशन। एडिशन इज़ द वे ऑफ कंबाइनिंग आइटम्स, कलेक्शंस और नंबर्स एंड काउंटिंग देम टुगेदर। प्लस साइन इज़ द साइन ऑफ एडिशन। जब भी हम आइटम्स को, कलेक्शंस को और नंबर्स को एक साथ काउंट करते हैं, इकट्ठा करके, दैट इज़ व्हेन वी आर डूइंग एडिशन। प्लस साइन is used for addition। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल है। हामिद has 3 strawberries and Sana has 2 strawberries। हमने इनका टोटल करना है। Let us see how many strawberries are they having all together। तो यहाँ पे है 3 strawberries plus 2 which is equal to 5 strawberries। So they both have 5 strawberries all together। Count, write and add। यहाँ पे है हमारे पास एक फ्रूट बास्केट और उसमें है हमारे पास कुछ फ्रूट्स। यहाँ पे आपने लिखना है पहले कि एप्पल्स कितने हैं हमारे पास। हाउ मेनी नंबर ऑफ एप्पल्स आर देयर? 2। एंड हाउ मेनी ब्लूबेरीज आर देयर? 1 2 3 and 4। यहाँ पे भी आप लिखेंगे 2 plus 4। लेट देम काउंट ऑल टुगेदर। 1 2 3 4 5 and 6। There is a teacher's note। Explain to the students that addition is the way of putting together or combining 2 groups to find out how many there are altogether। Complete this exercise in activity book for more practice। यहाँ पे हमारे पास एक साइंस की एक्टिविटी है कि आपने कंबाइन करना है 2 separate piles of natural items to observe the resulting larger group। अच्छा, अब अगला वे, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है मेरे बच्चों, कि यहाँ पे हम एडिशन कर सकते हैं बहुत ही डिफरेंट तरीक़ों से। तो अगला वे है हमारे पास एडिशन विद फिंगर्स। All of you know that we have 10 fingers on both of our hands and we use these fingers to calculate different numbers। Let us count on fingers। First we have 4, so take out 4 fingers। Then we have 2, take out 2 fingers of the other hand and then count them all together। 1 2 3 4 5 and 6। Now count on your fingers and add the numbers। 3 plus 2, आप देख सकते हैं यहाँ पे hands given हैं। 3 fingers of one hand and 2 of the other will make 5। Then 2 and 1 will make 3। Same goes with the last question। The next question is color। Count on your fingers then add the numbers। यहाँ पे आपने fingers को color करना है। यहाँ पे 2 hands are there। 2 plus 2, 2 fingers of this hand, 2 fingers of this hand। Color them and then count them all together। 1 2 3 and 4। Same goes with 3 plus 4, 3 color 3 fingers, then color 4 fingers and count them together। 1 2 3 4 5 6 7 and so on till the last of the question। There is a teacher's note। Explain to the students that their fingers can be helpful for solving addition problems। Show them how each finger represents a number and can be used to count।
Complete this exercise and activity book for more practice. यहाँ पे हमारे पास एक टेक्नोलॉजी एक्टिविटी भी है that use chalk or paint to mark numbers from 1 to 5 on your fingertips and use them to compute the sum. यहाँ पे आप अपने फिंगर्स को नंबर भी कर सकते हैं और फिर आप अपना टोटल निकालेंगे और ऐड करेंगे नंबर्स को, तो आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली टोटल को फाइंड आउट कर सकेंगे। अगला जो एडिशन का वे है वो है एडिशन ऑन नंबर लाइन। एज द नेम इंडिकेट्स, a line with numbers placed in their correct positions is called a number line. Let us look at the number line given below. हमने नंबर लाइन यूज़ करनी है और इसको यूज़ करने का एक तरीका होता है that to add we always move forward on a number line, और हमने जो भी नंबर्स ऐड करने होते हैं उतने हम जंप्स लेते हैं। हम देखते हैं कि कैसे। Let us see how we add the numbers 2 and 3 with the help of the number line. We start from 2. हमने 2 और 3 को ऐड करना है, यानी कि 2 + 3, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल टेक जंप्स फॉरवर्ड। एंड कितनी जंप्स लेंगे हम? द नंबर और एट द सेकेंड प्लेस वी आर गोइंग टू टेक 3 जंप्स, 1, 2 and 3। और किस नंबर पे लैंड होंगे हम? यस, इट्स द नंबर 5। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द आंसर यूजिंग द नंबर लाइन। Add the numbers on the number lines and write the answers. We have 3 + 5. 3 को हम हाईलाइट करेंगे क्योंकि यहाँ से हमने जंप्स लेना स्टार्ट करनी है। और कितनी जंप्स लेंगे हम? 1, 2, 3, 4, 5। Yes, and we are going to land on 8. So 8 is the answer. Then 7 + 2. 7 से हम स्टार्ट करेंगे, हाईलाइट 7 and take 2 jumps, 1 and 2. And the answer is 9. And same goes with the rest of the 3 questions. There is a teacher's note. Draw a larger number line on the board. Practice counting forward on the number line to represent addition. For example, if we add the numbers 2 and 5, start from 2 and move 5 jumps forward on number line. Complete this exercise in activity book for more practice. There is a mathematics activity. You can draw a large number line 0 to 10 on the floor and use footsteps to physically jump the correct number of steps to find the sum. आप एक बहुत बड़ी सी नंबर लाइन फ्लोर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं एंड यही जंप्स आप खुद ले सकते हैं। दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट 2 numbers while adding them. Addition with objects. अब हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द नंबर्स एंड फाइंड द टोटल। यहाँ पे हमारे पास कुछ पेयर्स हैं, हम इनको काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 5 पेयर्स एंड 1, 2, 3 पेयर्स। तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे? 5 + 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So total we have 8 pairs. We are going to write 8 over here and over here as well. Now we have some oranges. 1, 2, 3, write 3 here. 1, 2, 3, 4, write 4 here. Now count them together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The answer is 7. Write 7 over here and over here as well. And same goes with the last questions. There is a teacher's note. Ask the students to count and add the objects in each row. Moreover, encourage them to practice addition at home with everyday items like counting snacks or toys. Complete this exercise in activity book for more practice. यहाँ पे एक और मैथ्स की एक्टिविटी है that use 3 objects to put together and find the total. अगला वे है एडिशन का। हमारे पास हॉरिजॉन्टल सम्स। जी, यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टली सम्स को प्लेस करेंगे, जैसे 4 + 3 एंड यू आर गोइंग टू फाइंड द टोटल। इसके लिए आप जो है लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। सो यू आर गोइंग टू पुट 4 in your mind and take 3 numbers forward, 5, 6, 7, and this is how you can calculate the answer mentally as well. यहाँ पे हमारे पास वॉचेस भी हैं और कुछ फ्रूट्स भी जिनसे हम टोटल निकाल सकते हैं। Then 6 + 2, 6 in mind, 2 fingers out, 7 and 8, and this way you are going to calculate the other sums. और वर्टिकली भी ऐसे ही हम कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं इनके साथ, जैसे 3 के साथ यू कैन ड्रॉ 3 balls and 5 के साथ यू कैन ड्रॉ 5 balls. Then count them all together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Then 2 and 6. Again make 2 mangoes and 6 mangoes. Let's count them together. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 and 8. Again 8 is the answer. And same goes with the rest of the questions. There is a teacher's note. Complete this exercise in activity book for more practice. And there is an art activity that write a horizontal sum on one half of the paper, then redraw the problem vertically on the other half using a distinct color. तो आप horizontal और vertical sums जो हैं वो एक half पे horizontal sums बनाइए और दूसरे half पे vertical sums बनाइए and then you are going to calculate them. यहाँ पे है addition in columns. Add the units with the help of lines and write the correct answer. One has been done for you. यहाँ पे आप देखेंगे कि ये addition in columns is similar to addition which we have done vertically और हमने अब lines draw करनी है. That यहाँ पे आप देखेंगे 7 and 2. 7 lines are over here, 2 lines are over here and together they are making 9. यहाँ पे हमारे पास 6 और 2 है. First आप इधर 6 lines बनाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. फिर 2 lines बनाएंगे and count them all together 6, 7 and 8. 8 is the answer. Then यहाँ पे आप 4 lines बनाएंगे and 3 lines बनाएंगे. Let's count them all together. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. And this way you are going to find the total of all these sums in columns. There is a teacher's note. Familiarize the students with the concept of adding numbers vertically in columns. Engage them in hands-on activities to practice addition in columns and complete this exercise in activity book for more practice. There is an engineering activity that you can use small sticks and string to create a tens and ones column grid on the table before placing number cards in the grid. यहाँ पे है जी addition with shapes. How colorful this is. Count and add the shapes. The first one has been done for you. So here we have 3 triangles and 2 circles. Let them count all together. 1, 2, 3, 4 and 5. Then we have 3 circles and 3 squares. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. And this way the rest of the shapes are going to be added. और यहाँ पे मेरे बच्चों आपने sum भी खुद बनाना है. Yes, you are going to count the shapes, write and add the shapes. The first one has been done for you. So यहाँ पे है हमारे पास 4 squares and 4 ही circles. So 4 plus 4 together they are going to make 8. Then we have some triangles. 1, 2, 3, 4, 5. 5 will be written over here and 2 will be written over here. And together they make 7. 2 purple squares and 3 orange circles. So we are going to write 2 and 3 over here and together they make 5. There is a teacher's note. Guide and assist the students to count and add different shapes in each row. Complete this exercise in activity book for more practice. And there is an art activity as well that cut out simple shapes, circles and squares from scraps of paper and combine them to create and solve an addition sentence. How interesting this activity is, that you can cut out shapes first and then you are going to use these shapes for addition sums. And the last way in which we can use addition is the word problems. And why they are called as word problems? Because there are words and we are going to find out that how these words are telling us to add different numbers. तो यहाँ पे है हमारे पास एक question that there are 4 blue sparrows and 3 black sparrows. How many sparrows are there all together? तो यहाँ पे लिखेंगे हम blue sparrows हैं हमारे पास 4. You are going to write 4 over here and 3 black sparrows, 3 over here. So 3 plus 4 together they are going to make 7. 3 plus 4 equals to 7. Then the next word problem is there are 3 red caterpillars and 2 yellow caterpillars. How many caterpillars are there altogether? So red ones, how many red ones are there? 3. And yellow ones? 2. And together they are going to make 5. And either you are going to write the numbers as well. 2 plus 3 is equal to 5. There is a mathematics activity that act out a word problem using the learners as objects to find the total. Teacher's note, introduce the concept of addition as combining objects or numbers. Engage the students in solving simple word problems involving addition.
Complete this exercise in activity book for more practice. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन और हमने सीखी एडिशन। हम दोबारा मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।